Hello guys, Abhishek here. Today we'll be doing the challenge lab, which is the last lab of Gen AI pathway. So yeah, let's start. Let's click on the lab and click start lab. Open console in incognito as we do always. Log in with the given credentials. So till then, तुम लोग को मैं बता देता हूँ चैलेंज लैब होता क्या है बेसिकली। चैलेंज लैब बेसिकली लास्ट में रहता है हर पाथवे के। इसमें तुम लोग ने जो भी पूरे पाथवे में सीखा होगा, इसमें तुम्हें इम्प्लीमेंट करना होता है। लाइक प्रीवियस लैब्स में तुम्हें एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कि तुम्हें एक्चुअली में करना क्या है लैब्स में। बट चैलेंज लैब में तुम्हें बस टास्क दे देते हैं एंड तुम्हें खुद से करना होता है, फिगर आउट की कैसे करना है। सो बेसिकली यू कैन टेस्ट कि तुमने कितना सीखा है अभी तक पूरे पाथ में। सो या लेट्स स्टार्ट। बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ कि हमें करना क्या है लैब। Our challenge is to use Vision API to detect text and global landmarks in a given image. So we have to follow some standards. पहले चेक करना है कि ये सब API की एनेबल है या नहीं। क्लाउड विजन, क्लाउड ट्रांसलेशन एंड क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज। सो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्टली गो टू APIs एंड सर्विसेज। सो ध्यान से देखना पूरे लैब में, क्योंकि इस लैब में कुछ भी गलती हो तो तुम्हें स्कोर तुम्हारा नहीं दिखेगा एंड तुम्हारा लैब ठीक से कंप्लीट नहीं होगा। सो क्लिक ऑन एनेबल्ड एपीआईज एंड सर्विसेज। तो इधर तुम लोग चेक कर सकते हो कि ये अ, तीनों चारों एपीआईज एनेबल है या नहीं। सो इधर से चेक कर सकते हो। सो मेरे एनेबल है। सो नाउ गो टू credentials and now we have to create credential, like we have to create one API. So let's create it. Click on create credential and then click on API key. So API की create हो रही है। सो इधर एपीआई की का वैल्यू रहेगा, उसको कॉपी कर लो तुम लोग नोट पैड में। सो बिफोर कॉपिंग राइट एक्सपोर्ट इस एपीआई अंडरस्कोर की एंड इक्वल्स टू, लाइक ये कमांड है एंड देन पेस्ट योर एपीआई की जो तुम्हें वहां से मिली। सो ये कमांड हमें क्लाउड शेल में रन करना है टू एक्सपोर्ट अवर एपीआई की। सो इधर पूरा कमांड कॉपी कर लो एंड देन क्लोज दिस एपीआई की क्रिएटेड एंड देन एक्टिवेट क्लाउड शेल। क्लाउड शेल इधर से एक्टिवेट होता है, तुम लोग को पता अगर नहीं होगा तो इधर देख लो, ये सिंबल से क्लाउड शेल एक्टिवेट होता है। सो क्लाउड शेल इज एक्टिवेटिंग, इट टेक्स couple of seconds to activate. Click on continue. सो अभी हम लोग टास्क वन कर रहे हैं, creating an API. So yeah, cloud shell is activated. Paste that command, export space API underscore key equals to and तुम्हारा API key. Click on enter. Your API key is enabled. So we can check our progress of task one. It must be completed. Yeah, it is completed. So let's move on to the tasks. So in the task two, we have to create request.json file. So ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है and we have to create a JSON file whose name is request, right? So file create करने के लिए we will use command nano, small letters, nano and request.json. सो नैनो इज बेसिकली text editor. फॉर एग्जांपल नोटपैड तुम्हारा एक टेक्स्ट एडिटर है, वैसे नैनो होता है टेक्स्ट एडिटर। सो क्लिक ऑन एंटर। सो एक GNU नैनो इंटरफेस खुल जाएगा। सो पेस्ट दैट कोड दैट वी हैव कॉपीड। सो एक बार चेक भी कर लो कि ठीक से पेस्ट हुआ या नहीं।
या पेस्ट हुआ है ठीक से। एंड देन टू सेव दिस प्रेस कंट्रोल एक्स, बेसिकली कंट्रोल एक्स एग्जिट करने के लिए, देन प्रेस वाई, वाई मीन्स यस, एंड देन प्रेस एंटर। I repeat, firstly to save the file, firstly press Ctrl X, then Y, then enter. So yeah, हम लोग ने एक फाइल क्रिएट कर दी है request.json नाम से। Then our third task is to update that file, update that JSON file. We have to add our bucket image to the GCS image URI, and then we have to add the method to type, and type हमें set करना है text detection पे। So let's do that. सो बेसिकली इसका मतलब है कि हमें अपना जो जीसीएस इमेज यूआरआई है वो पेस्ट करना है, जो हमारा कमांड था रिस्पेक्टिवली उधर। तो कर देते पेस्ट। तो पहले जीसीएस इमेज यूआरआई किधर मिलेगा? सो वी हैव टू गो टू दिस नेविगेशन एंड गो टू द क्लाउड स्टोरेज एंड क्लिक ऑन बकेट्स। सो इधर से ऑलरेडी एक बकेट बना होगा, एज यू कैन सी। वी हैव टू क्लिक देयर, एंड इधर तुम्हें फिर ऑलरेडी एक इमेज भी बना होगा। It is named Planet Test Sans Research.jpg. So click on that. So इधर तुम्हें पूरा अपना इमेज का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। So we have to copy this gsutil URI. So copy this in the notepad, and now again जो क्लाउड शेल हम लोग ने नीचे किया था उसको ऊपर कर लो, and again go to the nano request.json। एडिट करना है राइट हमें, तो उधर वापस जाएंगे। So now here GCS image URI के लाइन पे जाओ, एंड आफ्टर दिस ग्रीन हाईलाइट तुम्हारा कर्सर इसके एक आगे लेके जाओ, एंड एक डबल इन्वर्टेड कॉमा डालो, देन पेस्ट योर यूआरआई एंड डबल इट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एंड उसके बाद जो टाइप है ये भी चेंज करना है हमें राइट। इधर बोला है टाइप चेंज करने के लिए। सो इधर बोला है कि टाइप में टेक्स्ट डिटेक्शन मेंशन करना है। सो लेट्स कॉपी टेक्स्ट डिटेक्शन because it is a method of vision API. So go to the line of type, and after this green highlight, double inverted and paste text detection, double inverted close, and उसके बाद एक कॉमा। सो तुम लोग एक बार ठीक से देख लो, मैं 5 सेकेंड वेट करता हूँ, तुम लोग देख लो कि कैसे होगा सिंटैक्स। इधर डबल इन्वर्टेड कॉमा चेंज बेसिकली हमें दो ही लाइन में करना है, जीसीएस इमेज यूआरआई एंड टाइप में। सो जीसीएस इमेज यूआरआई में कोलन के बाद स्पेस देके एक इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, देन योर इमेज यूआरआई जो तुम्हें वहां से मिला बकेट्स इमेज में जाके, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एंड देन हमें टाइप वाला लाइन एडिट करना है, उसमें लिखना है टेक्स्ट डिटेक्शन, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है उसको, एंड लास्ट में एक कॉमा डालना है। सो या लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो सब चेंजेस करने के बाद वी हैव टू सेव इट अगेन। सेव करने के लिए सेम चीज कंट्रोल एक्स वाई एंड प्रेस एंटर। सो इट इज सेव्ड। अभी देखते हैं आगे क्या करना है। सो नेक्स्ट वी हैव टू पेस्ट दिस कमांड, एंड इंस्टेड ऑफ योर जेसन के जगह हमें अपने जेसन फाइल का नाम डालना है विथ एक्सटेंशन। सो या लेट्स पेस्ट इट ऑन नोटपैड फर्स्ट, एंड योर जेसन की जगह हमारे फाइल का नाम। तो इधर एक बार लिख लेते हैं, बार बार सेम चीज कॉपी कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट जेसन। So copy it and paste it in the place of
your JSON. So it's done. Copy the command and paste it in the Cloud Shell. So the command run हो गया. So basically इधर हमने क्या किया? We have called a Vision API with curl. Curl is basically to calling something. So curl use करते हैं हम लोग. और कोई external link से call करना था हमें कुछ तो curl use कर दे. We want to use the text detection and landmark detection methods replacing your JSON with the name of file we have created earlier. So basically हमने call कर दिया है Vision API को. And then next command to save the curl response in text response.json file. So copy this and text response.json हमें हमने नहीं बनाया इधर वो अपने आप बन जाएगा क्योंकि वो कमांड में डाला है. So paste it in the notepad first and वापस से your json की जगह we have to paste request.json. So replacing it with request.json. Copy the command, paste it in your cloud shell. So ये भी रन हो गया है. Then we have to upload output to cloud storage. For this, we have to use this command. Click on authorize. So yeah, ये भी run हो गया. Now check my progress. Click करना है. Check करने के लिए कि हमने जो भी commands run किए and task किए वो हुआ कि नहीं. So yeah, it is done. So now we have to update the JSON file and method का नाम अब basically change करके landmark underscore detection करना है. So copy this and वापस से nano work file में जाना है. So nano plus dot json and इधर टाइप हमें चेंज करना है to landmark underscore detection and save it. Control X Y enter and now same चीज भी कर्ल से हमें कॉल करना है विजन एपीआई को. Paste in notepad, replace your JSON with request.json. Copy the command and paste it in the cloud shell. Now to upload output to cloud storage, we have to paste this command directly. So yeah, it is done. Now you can check my progress. जो हमने टास्क के एनालाइज करके पेज विद क्लाउड विजन एपीआई को कंप्लीट हुआ करें. सो या आवर लैब इज डन. लेट मी चेक कि सारे प्रोग्रेस चेक हो गए या नहीं. या इज डन. नाउ वी कैन एंड आवर लैब. Click on submit. So yeah, that was it for this challenge lab. So thank you for watching this. And yeah, बाकी labs भी आएंगे cloud foundations के. So yeah, happy learning.